Hi everyone. So I'm going to start new series of Indian Polity, and this is the sixth edition of Laxmikant, and I will try to cover full-fledgedly each and every page, and will try to make you understand about how to approach this book, because it's not that easy to approach this book without conceptual knowledge. So this is the sixth edition of Laxmikant, and I will try to cover each and every page with the conceptual knowledge about how to approach sources, how to go with each and every chapter, and try to make the notes as well. Try to make the notes as well, which is really important when you will revise. So एग्जाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप ईच एंड एवरी पेज कवर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द पावर टू एनी गवर्नमेंट how they should run the government, how should go with the pros and cons of any government procedure, administration, and other technicalities of the administration. So I will start with the definition of constitution, but before going ahead, I want to discuss with you there are few chapters which is really important, and let's go the index of this book, which is really important. So this is the trend analysis of the questions, because polity plays a very important role in all civil service examinations. And if I'll talk about UPSC, since 2000 to 2019, because this book is published on 2020, so I'll discuss rest of the questions of 2022-21 and how we will proceed it further. So first of all, go through the trend analysis, which is really important. Then I will jump into the index of this book. So first chapter is historical background, the company rule, the crown rule, and there are some notes and preferences. After that, making of constitution, demand for a constituent assembly, composition of the constituent assembly, working of the constituent assembly, committees of the constituent assemblies, enactment of the constitution, enforcement of the constitution, expert committees, and rest of other documents. So these are salient features of the constitution: preamble of the constitution, union and its territories, citizenship, fundamental rights, which is really important, and at least 3 to 4 questions asked last year in 2021, and most probably it will be like the assumption that it is really important for 2022 exam also. So there are a few sub points also. TPSP, which is again very important part, fundamental duties, amendment of the constitution. There are 2 questions asked in 21. So again it is very important, basic structure of the constitution, which is like Keshwananda Bharti case, completely related with this, and which is very important. So let's jump into the second part of the of this book, or you can say the chapter: system of government, parliamentary system, federal system, center-state relation. After that, inter-state relations, emergency provision, which is very important topic. Apart from this, president, vice president, and there are other qualifications, oath, conditions. If I'll talk about prime minister, central council of minister, cabinet committees, parliament, parliamentary committees, parliamentary forums and parliamentary groups, Supreme Court, judicial review,
and importance of judicial reviews, and constitutional provisions for judicial reviews, scope of judicial review. So there are subheadings also. If I'll talk about judicial activism, so there are lots of points. There are questions which is being asked in mains also. If I'll talk about public interest litigation, PIL, because this is originated by Supreme Court only. I will discuss about cases also, how PIL introduced, and then government. Part 4 is state government, governor, chief minister, state council of ministers. There are subhead also. Apart from this, state legislature, high court, tribunals, and subordinate courts, special provision for some states. Part 4, which is very important, and 3 questions has been asked in UPSC also. There are 2 other state exams. So this local government is very, very important, and especially Panchayati Raj, municipalities. And part 6 is UT, Union Territories, scheduled tribal areas, which is important. 7th part is Election Commission, UPSC. So every UPSC aspirant should understand what is UPSC, State Public Service Commission, and Finance Commission, GST, which is important and introduced in 2016. National Commission for SC, National Commission for ST, National Commission for Backward Classes. So these are constitutional bodies. We should know how it evolved. And apart from this, Special Officer for Linguistic Minorities, CAG, Comptroller and Auditor General of India, and Attorney General of India, Advocate General of a State, Niti Aayog, which is important. It has been introduced by Modi government in after 2014, and NHRC. This is non-constitutional body, but again it is functional. Apart from this, State Human Rights Commission, Central Information Commission, and State Information Commission, Central Vigilance Commission, and after that CBI, Lokpal and Lokayukt, National Investigation Agencies, National Disaster Management Authority. These are clause, objectives, functions. This is like a very, very important part. So we should also consider that as well, and we should study well. Apart from this, cooperative societies and official languages, again that's very important. Public services, classifications, constitutional provision as well. Rights and liabilities of government, special provision for relating to certain classes. And apart from this, part 10, political dynamics, political parties, role of regional parties, election laws, and election reforms, voting behavior, coalition government, anti-defection law. In 2021, it was completely in news, anti-defection law. So that's again very, very important question. And after that, pressure groups, NGOs, and national integration. Apart from this, foreign policies, again that is part of IR. So that's very, very important. We should understand about it. Working of the Constitution. So National Commission for Review the work of the Constitution. And at the last, there are like the pages which is mentioned in Laxmikant. That's very important, and everybody should go through it. So there are some short questions, some questions which is on the basis of that. These are sub tabs also. So go through the book page by page and make your own notes. So first of all, I will start from historical background. So let's go for the historical background first of all, which is really important. And so सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जनरली बोला जाता है कि दिस इज द कॉपी पेस्ट फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, बट
इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू, बिकॉज कॉपी पेस्ट अगर होता है तो चाहे एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी बातें हों या बुरी बातें हों, वो सारी एज इट इज रखी जाती हैं. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट लाइक दैट. इट्स completely different because all the good things from the different constitutions, because more than 60 countries constitution has been studied by constitutional committee, and then जितने भी प्रोविजंस थे, जो भी इंडियन सोसाइटी के लिए या फिर इंडियन नेशन के लिए इम्पोर्टेंट थे और जो यहाँ पर प्रॉपरली अप्लाई हो सकते थे, वो ही सारे क्लॉज एंड प्रोविजंस उठा करके और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं. एंड जो उसका बेसिस है 1935 से अप्रॉक्सीमेट मोर देन 200 प्लस प्रोविजंस रखे गए हैं. सो इट इज नॉट द कॉपी पेस्ट, बिकॉज मेंस में कई बार क्वेश्चन आया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट है या फिर एक अलग ही तरह का डॉक्यूमेंट है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एट ऑल अ कॉपी पेस्ट, बट इट इज द मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन पीपल. Because in the preamble it is completely mentioned that we the people of India, and this is actually the language, हम भारत के लोग. So ये चीज वहीं से स्टार्ट होती है. और सबसे पहले जो भी 60 देशों के संविधान को स्टडी किया गया था या कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया था, उसके बाद ही ये सारे प्रोविजंस भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं. ऐसा किए जाने के बहुत सारे कारण हैं. संविधान सभा पर कई प्रकार के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से, और ऐसा किए जाने के भी जो कारण थे उसमें भी कह सकते हो आपकी साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हो सकता है, सोसाइटल प्रेशर भी था कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है. पर जो सच्चाई है या फिर कह सकते हो कि जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. बिकॉज बहुत लोग कहते थे कि नहीं, ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, बट लेटर ऑन बिकॉज कमेटी जो बनी थी वो पर्टिकुलर सेगमेंट से सहमति कह सकते हैं आप, इनडायरेक्टली सहमति के बाद ही वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बने थे. और उसके बाद जब 1951 का इलेक्शन हुआ तो जो चुने गए लोग थे वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हाँ, मतलब इंडियन पब्लिक भी चाहती थी कि यही लोग कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें. सो सबसे पहले ऐसा किए जाने के संविधान पर कई प्रकार की अपेक्षा भी आक्षेप भी लगाए गए या फिर कह सकते हो एलिगेशंस लगाए गए थे. राष्ट्रवादी सदस्यों ने आरोप लगाया कि संविधान का निर्माण इस तरह से करना दास मनोवृत्ति का उदाहरण है, या आप कह सकते हो कि ये मतलब स्लेवरी थॉट प्रोसेस कह सकते हो कि हाँ, जो चीज़ पहले से थी वही लिखी गई है. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था, बिकॉज कुछ ने इसे उधार का संविधान भी कहा, पर वास्तव में ऐसा नहीं था. क्योंकि कोई भी संविधान या तो गंभीर विचार विमर्श करते हुए पहले के ज्ञान के आधार पर बनाया जाना अपने समय, धन और श्रम को बचाना होता है. बिकॉज हमारा जो संविधान है, संविधान सभा ने बहुत ही जो लक्ष्य लिया था, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस थे पुराने एक्ट से भी लिए गए हैं. और इन एक्ट्स के बारे में आई विल डिस्कस इन डिटेल, बट आई एम जस्ट मेकिंग अंडरस्टैंड कि किस किस तरह से प्रोसीड किया गया. तो जो भी अनुबंध थे या फिर आप कह सकते हो कि गंभीर विचार विमर्श के बाद जो संविधान सभा थी, उन्होंने सारे जो सदस्य थे उन्होंने काफी गंभीर विचार विमर्श करने के बाद ही संविधान सभा का निर्माण किया सबसे पहले. उसके बाद जितने भी मतलब बिकॉज दे पीपल एक्चुअली फेल्ट द पेन ऑफ, जो आप कह सकते हो कि जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ही जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जो भी स्ट्रगल किया इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए, वो सब वो लोग जान सकते थे. जो क्रिटिसाइज कर रहे थे शायद वो थोड़े अलग तरीके से सोच रहे थे, बट किसी भी देश को चलाने के लिए जब भी संविधान लिखा जाता है तो वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ध्यान में रखकर नहीं लिखा जाता. बिकॉज
संविधान बनने के बाद एक कंट्री, एक नेशन जो वर्ल्ड में अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, उसके रिलेशन दूसरी कंट्रीज से कैसे होंगे और वो किस तरीके से अपना गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, वो सारी बातें भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती हैं। सो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये सारी कमेटी ने ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजंस थे वो सारे इसमें इंक्लूड किए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान सभा का प्रमुख लक्ष्य एक उत्तम संविधान तैयार करना था। आई मीन इट शुड बी, इट वॉज लाइक अ वेरी वेरी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन विच विल हेल्प each and every Indian to strengthen their power, and then they can feel their rights also, because बहुत सारे जो भी प्रोविजन हैं, बहुत सारे क्लॉज हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इंडियन सिटीजन्स को एम्पावर करते हैं। सो यही सारी जो चीज़ें थी, जो भी छानबीन के बाद ये सारी चीज़ें आई हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटिफिकेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जितनी भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इंडिया में है, पॉपुलेशन, कास्ट, रिलीजन, बहुत सारे तरह धर्म जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर, और वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जितनी भी छानबीन करी गई है संविधान सभा के द्वारा, वो शायद बहुत एक छोटा काम नहीं है, ये काफ़ी एक अचीवमेंट आप कह सकते हो। बिकॉज सारे जितने भी क्लॉज थे वो एक अलग तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं। बिकॉज इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं किया जा सकती, संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधानों से बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन उन संविधानों की अनेक बातों को त्यागा भी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इंग्लैंड से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, लेकिन इट इज यूनिटरी, जो भी बिकॉज जो इंग्लैंड पार्लियामेंट्री सिस्टम था दैट वाज यूनिटरी, बट इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज कम्प्लीटली डिफरेंट। बिकॉज ये जो है वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम अमेरिकन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लिया गया है, और यहाँ का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो मतलब इट इज लाइक अ डिफरेंट, यू कैन से different in nature, because it was quasi federal, because it is not completely federal, not unitary, but it is quasi federal, or it is having the twist of unitary along with federal system. So एक अलग तरह का ट्विस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ना तो ये बहुत रिजिड है, ना ही ये बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि कभी कभी ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के कैरेक्टर शो करता है, बट कभी कभी ये बहुत रिजिड कैरेक्टर शो करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी कोई चेंज आना हो या कोई भी अमेंडमेंट करना हो, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो काफी रिजिड नेचर शो करता है। सो आई विल डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड अबाउट since starting there are these acts, so there are questions has been asked in prelims about the Company Rule Regulating Act 1773, Amending Act of 1781, Pitt's India Act 1786, Act of 1786, Charter Act 1793, Charter Act 1813, 1833, 1853. So these points I will discuss in our next class. I will try to come with the points, or maybe try to mention the handwritten notes, which is more effective than the PPT and rest of other things. So I will try to compile it and will come back to you. Thank you so much.